Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Rainwar. I am Vrinda. I am your business studies teacher of class 11. So I hope you all are safe at your place and also following the instruction given by the government during this pandemic. So before starting the course of business studies, I would like to introduce the basic introduction of the subject of business studies. So what is business studies? For both classes 11th and 12th commerce students, 4 subjects are compulsory and mandatory. First is accountancy, second is business studies, third is economics, fourth is English. And apart from these subjects, a few optional subjects are maths, IP, entrepreneurship, physical education, and yes, also Hindi. So my subject is business studies. And business studies is an important subject for commerce students. Business studies is a subject that deals with the operations and organization of modern business enterprises. The subject covers each feature of a business firm, such as how a firm will be affected in different business situations. Its study combines elements of accountancy, finance, marketing, organization studies, and economics. Okay, so business studies helps to provide opportunity for self development. So basically business studies is a very important subject, and this is the very basic introduction of business studies. I recommend you this book. The writer name is Poonam Gandhi. This is the reference book. NCERT book is also important for business studies subject. Now I would like to introduce your syllabus or some of the guidelines of your syllabus. So look, this is your business studies syllabus that is divided into 2 parts. Part A, foundations of business. Part B, finance and trade. 6 chapters are included in part A. 4 chapters are included in part B. So first chapter is nature and purpose of business. Second, forms of business organizations. Third is public, private and global enterprises. Fourth is business services. Fifth is emerging mode of business. Sixth is social responsibility of business and business ethics. Part B, finance and trade. So 7th chapter is sources of business finance. 8, small business. 9, internal trade. 10th is international business. So basically जब आप ये जो 10 चैप्टर्स रीड कर लेंगे तो आपको बहुत बेसिक नॉलेज हो जाएगा बिजनेस में कैसे वर्क करना है, इंटरनेशनल बिजनेस कैसे होता है, हाउ टू एक्सपोर्ट, हाउ टू इम्पोर्ट द प्रोडक्ट्स, what is the services of banking sector, what are the types of banks, and what is the nature and purpose of business, कि आपके objectives क्या है बिजनेस को करने के, बिजनेस को कैसे रन करना है, ग्रोथ कैसे लाना है बिजनेस में, आपको वर्क किस अकॉर्डिंग करना है, आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे कॉन्टिन्यूसली चेंजेस होते हैं, तो उन चेंजेस से कैसे कॉप अप करना है आपको. सो बेसिकली आपको यहाँ पे ये नॉलेज हो जाएगा. नाउ design of question paper of business studies. So typology of questions, objective MCQ, short answer first, short answer second, long answer type of question first, long answer type of question second. So
Types of questions, first is remembering, second is understanding, third is applying, fourth is evaluating. सो आपके MCQs आएंगे 20 मार्क्स के, जिसमें आपका ट्रू फॉल्स हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, 4 ऑप्शंस आपके पास आ सकते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव या MCQ क्वेश्चन. शॉर्ट आंसर टाइप 5 क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड 3 questions, long answer type of question 3 questions and long answer type second 3 question. तो टोटल 34 questions होंगे आपके पास, इसमें से 20 आपके MCQs होंगे. टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा. 20 मार्क्स में आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा. ओके फाइन. सो पार्ट ए, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस. So first chapter is nature and purpose of business. So contents as per latest CBSE syllabus: history or trade and commerce, next business concept, next types of human activities, economic activities and non-economic activities, concept of business, objective of business, economic objective, social objective, individual objective, role of profit in business, classification of business activities, industry के meanings, types, commerce, trade, what is business risk. Now the chapter is divided into 2 sections. Section first deal with the history of trade and commerce an incident in India. Section second deals with the concept, nature and purpose of business. So basically our topic is nature and purpose of business. So what is trade? Trade is basic economic concept involving the buying and selling of goods and services with compensation paid by a buyer to a seller, or the exchange of goods or services between parties. And so what is commerce? Commerce is another word for trade or business and can mean simply the buying and selling of goods and service. So a second section is business concept. Business concept. What is business? Business is extremely important to a country's economy because businesses provide both goods and services and jobs. So basic introduction is business concept. All human beings, wherever they are required to perform some or the other activity to satisfy their needs. They pursue different occupation to earn it and to get some physiological satisfaction. Activities which human beings undertake are known as human activities. Some of these activities are undertaken to earn money. Please underline this. But others are performed to derive personal satisfaction. On examination of the human activities, one can find that some of these activities produce direct economic benefits. Examples: working in office, running a shop, practicing as a doctor, etc. While others do not produce direct economic benefits. Example: cooking, playing, going to school, going to temple, etc. So types of human activities. Human activities can be classified into 2 categories. First is economic activities, second is non-economic activities. So look, what is economic activities? Activities which are undertaken by people with the object of earning money are known as economic activities. Again I repeat, activities which are undertaken by people with the object of earning money are known as economic activity. वो एक्टिविटी जिसमें बेसिक आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पैसा कमाना है, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी.
These activities are concerned with production, exchange and distribution of goods and services. The purpose of economic activity should be expectation of money income which is used for further creation of wealth or assets. अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हम एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक आप कहीं पे वर्क कर रहे हैं तो वहाँ से आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे आपको पैसा मिलेगा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आप कहीं पे वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक फिक्स सैलरी है आपकी, जो कि आपको पैसा आपको मिलना ही है, आपके एंडिंग पे, मंथ एंडिंग पे आपको पैसा मिलना है, तो दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। घर में आप खाना बना रहे हो, दैट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज आपको घर पे खाना बनाने का पैसा नहीं मिलेगा, आप अर्न नहीं कर रहे हो, वहाँ पे आपको डेली आप, वो तो आपका घर का काम है, बेसिक वर्क है आपका, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। आप ये थोड़ी ना बोल सकते हो अपने पेरेंट्स से कि नहीं मैं तो यहाँ खाना बना रही हूँ तो मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, दैट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। So examples of economic activities: production of goods in a factory, distribution of goods by a wholesaler or retailer, working in a factory as an employee, practicing as a doctor, lawyer, वर्किंग एज ए टीचर इन स्कूल एक्सेट्रा। आज मैं जैसे महावीर इंटरनेशनल स्कूल में वर्क कर रही हूँ तो मुझे एक फ़िक्स सैलरी अमाउंट दिया जाएगा कि ये आपका फ़िक्स सैलरी अमाउंट है, मेरे को मैं यहाँ पे कुछ अलग वर्क नहीं कर रही हूँ कि मेरे को पैसा नहीं देंगे वो लोग, मैं एक एम्प्लॉय हूँ यहाँ पे और मुझे यहाँ पे पैसा दिया जाएगा, तो ये मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। सो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सो फर्स्ट इज़ बिजनेस, सेकेंड इज़ profession, third is employment. Okay, so first is business. Business refers to those economic activities which are connected with the production, purchase, sale or distribution of goods or services with the main objective of earning profit. Again I repeat, business refers to those economic activities which are connected with the production, purchase, sale or distribution of goods or services with the main objectives of earning profit. बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मैं कोई बिजनेस रन कर रही हूँ तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अर्निंग प्रॉफिट, कि मुझे प्रॉफिट अर्न करना है। मैं सोशल ऑब्जेक्टिव, उसमें ऑब्जेक्टिव्स की बात हम अलग करेंगे कि मेरा ऑब्जेक्टिव अलग है कि सोशल ऑब्जेक्टिव अलग है, ठीक है। नाउ एग्जांपल्स है फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल्स एक्सेट्रा। नाउ सेकंड इज प्रोफेशन। प्रोफेशन रेफर्स टू द एक्टिविटीज विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल टू बी अप्लाई बाय एन इंडिविजुअल इन हिज वर्क टू अर्न ए लिविंग। Again I repeat, profession refers to the activities which require special knowledge and skill to be applied by an individual in his work to earn a living. These activities are subject to guidelines or codes of conduct laid down by the professional bodies. The people who are engaged in profession are known as professionals, like CA. पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, उसके बाद में आप जब कंप्लीट एग्ज़ाम्स फाइट करते हो, IPCC आपने दिया, जो कि अब CA फाउंडेशन है, फिर उसके बाद में आपने आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट की, थर्ड स्टेप कंप्लीट की, जो लास्ट स्टेप आपने कंप्लीट करने के बाद में आपका जो होता है तो आपको डिग्री मिलती है, दैट इज़ प्रोफेशनल्स। आप प्रोफेशनली वर्क कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि बिकॉज उसका कोड ऑफ कंडक्ट भी है। फॉर एग्जाम्पल, लॉयर्स are professionals engaged in the legal profession governed by the Bar Council of India, and CA, ICAI, Indian Institute of Chartered Accountants. Okay, doctors are professionals who are in the medical profession and are governed by the Medical Council of India. So business is clear, profession is clear. Now third is employment. Employment refers to an activity in which an individual works regularly for another person and gets remunerated in return.
Those who are employed by others are known as employees. The person who engages others to work regularly for them are known as employers. The remuneration paid by employer to employee is known as salary or wages. Employers कौन होंगे? जो टॉप लेवल पे वर्क कर रहे हैं. एम्प्लॉयज़ दैट इज मिडल लेवल एंड लोअर लेवल. तो टॉप लेवल पे एम्प्लॉयर्स होंगे, दैट इज़ हमारे टॉप लेवल. एक हिरार्की होती है हमारे बिजनेस में, एक हिरार्की होती है. हम जब भी किसी भी बिजनेस में वर्क कर रहे हैं तो उसमें एक हिरार्की होती है. टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल. टॉप लेवल पे जो बिजनेस के ऑनर्स हैं वो वर्क करते हैं. मिडिल लेवल पे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैनेजर्स हैं, वो वर्क करेंगे. थर्ड इज़ लोअर लेवल, जो नॉर्मल एम्प्लॉयज़ हैं, जिनको जो टॉप लेवल वर्कर्स और मिडिल लेवल वर्कर्स के अंडर वर्क करते हैं. सो एम्प्लॉयमेंट इज refers to an activity in which an individual works regularly for another person. आज मैं यहाँ वर्क कर रही हूँ, मैं स्कूल के लिए वर्क कर रही हूँ, ओके, एंड गेट्स रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न. Those who are employed by others are known as employees. The persons who engage others to work regularly for them are known as employers. The remuneration paid by employer to employee is known as salary or wages. Examples of employment: working in offices, banks, insurance companies, shops, as a manager, clerk, peon, salesman, etc. So look, what is the difference between business, profession and employment? So first, basis of distinction. जब भी आपको डिफरेंसेस पूछते हैं तो आप एक बेसिस, जो बेसिस है उसकी अलग सीरियल नंबर लगाएंगे, फिर बेसिस एंड डिफरेंस किसके बीच में करना है, लाइक बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. तो अब आप उनका अलग से रॉ और कॉलम बनाएंगे, ठीक है. सो फर्स्ट इज कमेंसमेंट. बिजनेस may commence with the decision of entrepreneur. Profession may commence on completion of a degree course and by getting a certificate of practice. आप CA कोर्स करते हो, उसके बाद में आपको डिग्री मिलती है, ठीक है. That is profession may commence on completion of a degree course and by getting a certificate of practice. Third is employment. Employment commences on joining duty by entering into a service agreement. Second, qualification. No minimum qualification required before starting business. आपको जब बिजनेस स्टार्ट करना है आपको कोई क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है, ठीक है. प्रेस्क्राइब्ड अब है प्रोफेशन. प्रेस्क्राइब्ड एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड. यस, आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है. हम CA का एग्जाम्पल लेते हैं. पहले आप CA फाउंडेशन क्लियर करेंगे, दैट इज़ एंट्रेंस एग्ज़ाम. फिर आपका IPC से फर्स्ट आता है, तो आप IPC से फर्स्ट क्लियर करते हैं, देन IPC से सेकेंड ग्रुप क्लियर आपने किया, तो उसके बाद में आपको एक ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है कि आपको ऑडिट करना आ जाए, वर्क करना आ जाए कि कैसे अकाउंट्स का वर्क किया जाता है, ऑडिट कैसे की जाती है. सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ क्वालिफिकेशन. Qualification in employment, qualification depends on the nature of job. Like I am a teacher, तो मुझे टीचिंग करनी आनी चाहिए, ओके. ऐसा नहीं है कि विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट टीचिंग नॉलेज आपने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया. Now third is investment. बिजनेस. कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड ऑन द स्केल ऑफ बिजनेस. आपका स्मॉल बिजनेस है तो आपको उस अकॉर्डिंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगी. आपका बिग बिजनेस है, आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, तो उस अकॉर्डिंग आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी. तो स्मॉल स्केल ऑफ बिजनेस या स्केल ऑफ द बिजनेस. नाउ लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड. आपका जो प्रोफेशनल स्ट्रीम है उसमें आपका लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड होता है. लाइक जो आपका कोर्स की फ़ी हुई वो आपका देना होता है आपको, और उसके बाद में आपको अपना ऑफिस ओपन करना होता है, या फिर आप किसी के
अंडर जॉब करते तो वैसे आपको सैलरी पैकेज के अकॉर्डिंग आपको पे किया जाता है. नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड. थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट, नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड. बिकॉज आज हम एग्जाम्पल लेते हैं स्कूल का. स्कूल है, मैं जब यहाँ पे वर्क करने आई तो मुझे यहाँ पे मनी थोड़ी ना देनी पड़ी, कोई मुझे पैसा थोड़ी ना देना पड़ा यहाँ पे, नहीं. यहाँ पे मेरी क्वालिफ़िकेशन वर्क कर रही है कि मेरी क्वालिफ़िकेशन जिस अकॉर्डिंग है उस अकॉर्डिंग मुझे स्कूल या मैनेजमेंट पे करेगा. फोर्थ इज़ रिस्क. इन बिजनेस देयर इज़ ऑलवेज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. इन प्रोफेशन देयर इज़ लिटिल रिस्क प्रेजेंट. इन एम्प्लॉयमेंट देयर इज़ नो रिस्क इन्वॉल्व्ड. देयर इज़ नो रिस्क इन्वॉल्व बिकॉज किसी कंपनी को लॉस हो जाता है तो उसके ऑनर्स उस लॉस को बियर करेंगे, ना कि एम्प्लॉयज़ करेंगे. फिफ्थ इज ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट. ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज पॉसिबल विथ सम फॉर्मेलिटीज़ इन बिजनेस. इन प्रोफेशन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट पॉसिबल. In employment, not possible to transfer the service contract. Now, sixth is main objective. In business, the main objective of business is to earn profit, earn money. Okay. In profession, the main objective of profession is to provide service, and the main objective of employment is to earn income in the form of salary by satisfying the employer. Now, seventh is code of conduct. In business, there is no prescribed code of conduct for business. In profession, code of conduct is prescribed by the professional associations. And third is employment. The main objective of employment is to earn income in the terms and conditions of service contract are applicable on employees. And the eighth is nature of work involved. In business, it involves production, purchase and sale or exchange of goods and services. In profession, it involves a personalized service of specialized nature. And in employment, it involves performing the work as assigned by the employer. And ninth is reward. Reward for business is called profit. Reward for profession is called fee. Profession fee. आज आप रिटर्न फाइल करवाते हो तो कितना उनकी फ़ी क्या है, सीए की फ़ीस क्या है, यही बोलते हैं. लाइक दिस. रिवॉर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड सैलरी और वेजेस, कि मेरा मंथ एंडिंग हो गया, मुझे कितनी सैलरी मिलेंगी, दैट इज़ द रिवॉर्ड. ओके, सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आपको कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, या फिर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस, व्हाट इज़ द प्रोफेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन. नाउ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. फर्स्ट केस स्टडी. सो अमर, अकबर एंड एंथनी आर फ्रेंड्स pursuing different careers. A. Amar is a doctor and is running his own clinic. B. Akbar runs a bakery and makes breads and biscuits, whereas C. Anthony is an IS officer. You are required to identify the occupation. And second question is differentiate between them on the basis of transfer of interest, reward and code of conduct. सो डिफरेंस आपने अभी पढ़ा है तो डिफरेंस तो आप बता देंगे. एंड द फर्स्ट इज आइडेंटिफाई देयर ऑक्यूपेशन. तो फर्स्ट अमर इज डॉक्टर एंड इज रनिंग हिज ऑन क्लिनिक, तो दैट इज प्रोफेशनल डिग्री. तो फर्स्ट ऑक्यूपेशन ए का होगा प्रोफेशन. बी. अकबर रन्स अ बेकरी एंड मेक्स ब्रेड्स एंड बिस्किट्स, whereas so this is the business. C. Anthony is an IS officer. So this is
a profession. Now, non-economic activities. Non-economic activities, the activities which are undertaken by an individual with the motive of getting physiological satisfaction are known as non-economic activities. Going to temple, examples है going to temples, charity, social services, production for self-consumption, etc. The end result of non-economic activities is not earning profit or creation of wealth, but it gives satisfaction. मंदिर जाने से सिर्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है, पैसा नहीं मिलता है. डोनेशन कर रहे हो तो पैसा जा रहा है, बट आपको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन है कि हाँ मैंने कुछ डोनेट किया, किसी का कुछ अच्छा भला होगा. ओके, दैट इज सोशल वर्क. वेदर an activity is economic or non-economic, it depends on the motive with which it is performed. The same activity can be economic if it results in earning money and can be non-economic if end results in non-monetary gain. For example, when a teacher is teaching in a school, it is an economic activity. Again, I repeat, when a teacher is teaching in a school, it is an economic activity because he or she gets salary for teaching. Okay, and when the teacher is teaching his or her son at home, then it is non-economic activity. आप एक टीचर है जो स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसको सैलरी मिलेगी, बट वो घर पे अपने बेटे को पढ़ा रहा है, दैट इज non-economic activity. Okay, then it is non-economic as he or she will not get monetary benefits for teaching, but the end results is satisfaction of teaching one's own child. In the same way, when a farmer is producing crop for selling in the market, it is called economic activity, but when he is cultivating crop for his self consumption, then it is called non-economic activity. Okay, so human activities divided in two parts: economic activity, non-economic activity. So economic activity divided into three parts: business, profession and employment. And non-economic activity divided in three parts: religious, parental, social. And what is the difference between economic and non-economic activity? First is motive. These activities are undertaken with an economic motive of earning money and creation of wealth. आपका मेन मोटिव मनी अर्न करना, पैसा कमाना. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, these activities are undertaken with the social or physiological motive. ठीक है. सेकेंड इज एक्सपेक्टेशन. मनी इनकम इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज एक्टिविटीज. आप कुछ वर्क करेंगे तो आपको एक्सपेक्ट तो होगा ही कि हाँ मुझे इतना पैसा मिलेगा. मनी इनकम इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज एक्टिविटीज. आप डोनेशन कर रहे हैं तो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मुझे पैसा मिलेगा, नहीं, क्योंकि दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. और आप जब डोनेशन कर रहे हो तो आपको खुद को पता है कि आप दान कर रहे हो, किसी का भला कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं. एंड थर्ड इज पर्पज. द पर्पज ऑफ दीज एक्टिविटीज इज क्रिएशन ऑफ वेल्थ. In non-economic activity, the purpose of these activities is physiological satisfaction. Fourth is outcome. The outcome of these activity is production of goods and services. The outcome of these activities is mental satisfaction of persons who undertake them. Fifth is examples है हमारे economic activities के business, profession, employment. And non-economic activities is like family oriented activities, religious, social services and patriotic activities. Okay, fine. Now next topic is concept and characteristics of business. We will discuss in next video. Okay, fine. Thank you.